So from the given differential equation, our m and n are going to be, so dx coefficient is going to give you m of x comma y, and dy coefficient is going to give you n of x comma y. So write down. So m of x comma y is going to be x square plus y square plus 1, and n of x comma y is going to be minus 2xy. Next thing, I'm going to check whether my given differential equation is exact or not. For that, I need to check this condition. Okay, do not speak in between. I'm explaining. In case you find any difficulty, you stop me and you let me know that here you're not understanding. So after writing m and n, the next step you're going to do is that you're going to check whether my given differential equation is exact or not. For that, you need to check that the partial derivative of m with respect to y is equals to partial derivative of n with respect to x or not. So let us do that. So differentiate partially m with respect to y, treating variable x as constant. Okay, so I'm using another color. So here is my m. Now I'm going to differentiate this m partially with respect to y, treating variable x as constant. So derivative of x square is going to be, because I'm differentiating partially with respect to y, so variable x is going to be constant. Therefore, the derivative of x square is going to be 0, plus derivative of y square with respect to y is going to be 2y, plus 1 is a constant, and derivative of 1 with respect to y is going to be 0. So ultimately you got del m by del y equals to 2y. In the same manner, you're going to differentiate n partially with respect to x, treating variable y as constant. So here is my n, here is my n. I'm going to differentiate it partially with respect to x, treating variable y as constant. So in this constant terms are minus 2 and y. So that I'm going to take it out. Minus 2y, I took it out, and derivative of x with respect to x is going to be 1. So at the end, we are left with minus 2y. So I can see del m by del y is 2y and del n by del x is minus 2y. So since they are not equal, therefore my given differential equation is not exact. Since del m by del y is not equals to del n by del x, therefore my given differential equation is not exact. The given differential equation is not exact. This is what I have checked just now. So far what I did, I wrote m and n, then I checked whether my given differential equation is exact or not. Then I got to know ki del m by del y is 2y and del n by del x is minus 2y. So since they are not equal, therefore my given differential equation is not exact. So our next task is to make my equation, my given differential equation, an exact differential equation. So for that, what I need to do, I need to find out the integrating factor, which depends upon the 4 rules, which depends upon the one of the rules which I have mentioned earlier. So it doesn't fit. I can see that my given differential equation doesn't fit in rule number 1. And rule number 1 says that your given differential equation should be homogeneous. So clearly it is not homogeneous differential equation. Therefore, I cannot apply rule number 1 over here. So also, I can see it doesn't fit in rule number 2 also. Right? No, rule number 2 was in this way. Yes, ma'am. Yes. So it doesn't fit in rule number 2 also. So now I will think of x dy. It doesn't fit in rule number 2 also. Now I will think of rule number 3, which says, rule number 3 is what? Rule number 3 says, so calculate del m by del y minus del n by del x and divided by n. And it should be a constant when you calculate this term, when you calculate this factor. If it comes out to be a constant or function of x only, or you can say polynomial of x only, or some equation in terms of x only, then you're going to use this formula. Then in that case, मैम hello, yes, say मैम यही स्टेटमेंट नहीं समझा था, मतलब ये हम लोग ने कैलकुलेट किया तो ये इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर रहना चाहिए, मतलब हाँ, तो अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके,
सो या तो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए या तो फिर सम फंक्शन या फिर सम पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x होना चाहिए. मतलब देयर शुड नॉट बी अ मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि उसके अंदर y आ जा रहा है, ऐसा नहीं आना चाहिए. You should be getting some polynomial or some function which is containing only and only variable x. अगर y भी present हो रहा है, that means that this rule is not applicable. Then you will go for rule number 4. Okay. So if I'm calculating this factor and this factor is coming out to be a constant or a function of x only, then integrating formula is going to be e raised to integration of f of x dx. So let us check that whether I'm getting constant or function of x only or not. Okay. So we calculated del m by del y. Okay, let me scroll down. So consider del m by del y minus del n by del x upon n. What was our del m by del y, kids? Del m by del y was, what we got del m by del y as 2y. 2y. And del n by del x we got as minus 2y. Okay, so that I will substitute first. So del m by del y is 2y minus del n by del x is minus 2y. Am I right, kids? Yes, Upon n. Yes. What is our n now? What is our n? Minus N is what? 2xy. Minus 2xy. So that you substitute over here. Minus 2xy. What I will get? This minus minus will become plus, and I will get 2y plus 2y, which will become 4y. Upon minus 2xy. What is getting cancelled out? This y and y is getting cancelled, and this will get cancelled. So you'll be left with minus 2 upon x. Am I right? Yes, ma'am. So tell me कि क्या हमें function of x only मिला क्या? Yes, So I ma'am. can see when I calculated this factor, I'm getting minus 2 upon x, which is containing only and only x. So this is called as function of x only, which we denote by f of x. There is no other variable present in this function. Okay. So yes, rule number 3 is applicable. Therefore, your integrating formula will become e raised to integration of f of x dx. And from where you're getting f of x, ये जो factor आपने ऊपर calculate जो किया हुआ है, so that is your f of x. ये आप देख सकते हैं इधर. So that I'm going to substitute over here. Integration of f of x is what? Minus 2 upon x dx. Now when you're integrating, take constant outside, you will get e raised to minus 2, and you'll be left with inside 1 upon x dx. We all know that integration of 1 upon x is what? Log x. Log x is equals to, now you apply the property of this thing, my a log b, which can be written as e raised to log x raised to minus 2, right? Now, Yes, now ma'am. here logs base is E with the e, base. and here is also e. What is this? Cancel. What इसका आंसर क्या होता है बच्चों? 1 होता इसका है. आंसर होता है a. नो बच्चे, इसका आंसर होता A, है a. हाँ. So हाँ, इसका इस आंसर केस क्या हो में जाएगा? होता है. x raised to minus 2 हो जाएगा, which is going to be 1 upon x square. So far, any doubt to anybody? What I have done? पहले तो exactness check किया, हमें मिला कि वो exact नहीं है. Then we are thinking of कि which rule of integrating factor are gonna come. Rule number 1 और rule number 2 तो finally clearly discard हो गए. We are thinking of rule number 3, which are saying कि you calculate this factor first and you check whether you're getting function of x only या फिर constant मिलना चाहिए. And जो भी रहेगा, that you are going to denote it by f of x, and that f of x you are going to substitute in the integrating factor formula. So this is what I have done over here. अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अभी क्या करने का इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बच्चों? मैम वो स्टार में डालना है. स्टार. Absolutely right, absolutely right. So can you all see this star equation? ये जो इक्वेशन आपका, ये इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So let us multiply it. आप मुझे बताओ पहला वाला टर्म क्या होगा? x square plus y square plus 1 है. So from star, so multiply करे throughout with x square. So मेरा ये वाला टर्म था x square plus y square plus 1 dx, and the second term was this minus dy. So this was my given differential equation. ये इक्वेशन में मुझे क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है. मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिला है बच्चों? 1 upon x square. मल्टीप्लाई थ्रू आउट विद 1 upon x square.
So what I will get? X square plus y square plus 1 upon x square. Am I right, kids? Yes, ma'am. Dx minus 2xy upon x square dy equals to, when I will multiply on the right hand side क्या मिल जाएगा मुझे? Zero. Zero. Absolutely right. Then okay, then फिर हम थोड़ा सेपरेट करते हैं इसको, क्या हो जाएगा? We apply this log of index. Yes. So 1 plus y square upon x square plus 1 upon x square dx minus क्या होगा? 2y by x. 2y by x dy equals to 0. तो ये आपको क्या मिला? अभी एक ये आपका ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे मिला? जो आपका जो पुराना डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज योर न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको क्या लगता है कि ये एग्जैक्ट होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, absolutely. It is going to be exact differential equation. तभी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या है? To make differential equation exact differential equation. Therefore, the new differential equation is exact differential equation. तो आपको वापस से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है बच्चों, कि वापस से आप del m by del y और del n by del x कैलकुलेट करो. जिसको करना है वो कर सकता है, नो प्रॉब्लम. बट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी exact differential equation only. So after getting my new differential equation, which is an exact differential equation, therefore the solution of exact differential equation is, tell me what was the formula for exact differential equation? Solution का formula क्या था? Integration of m into dx. Yes, integration of m dx, treating variable y constant, correct. Then plus only those term of n not containing x. Containing x. Only dy. those term of n not containing Not containing x. Only those term of n not containing x. Now you put the values for m and n in this formula. Differentiated with respect to y equals to integration constant. So write down the formula for m. m में क्या क्या आएगा? 1 plus y by, अभी इसमें ये जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, ये हमारा न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें m और n क्या हो जाएगा? m will become 1 plus y square upon x square plus 1 upon x square, and n will become, n क्या हो जाएगा? minus 2y upon x. Right. Now you write down m, which is 1 plus y square upon x square plus 1 upon x square. Integrated with respect to x, and keep in mind that I'm treating y variable y as constant. Plus only those term of n not containing x. I can see there is only one term in n which is containing x. So what is going to be there in the second integration? -2. -2. Very good. याद रखो, only those term of n not containing. तो कोई भी term नहीं आएगा, right? Because second term are not gonna come because n में ऐसा एक भी term नहीं. This is your n बच्चा. This is your n. Let me use another color. This is your n बच्चा. And in this there's only one term. And वो term में भी क्या है? x present है. But ये formula क्या बोलता है कि we have to consider only those term which is without x, which is not containing x. ऐसा तो कोई term है ही नहीं. So my second integration is not gonna come. Is that clear to all the kids? The second term will not come and is equals to integration constant. Now अभी आपका टास्क कितना इजी हो गया है. चिंदी क्वेश्चन अभी तो कितना चिंदी इंटीग्रेशन अभी आप कर ही सकते हो. Okay, so you have to integrate it with respect to x, treating variable y as constant. So let us integrate it. So integration of 1 with respect to x, y is constant, so this y square is going to come out of the integration, and you will integrate 1 upon x square. I can write x raised to -2 dx plus again x raised to -2 integration is equals to integration constant. Integrated now. Integration of 1 with respect to x is going to be x. Absolutely right. Plus y square. Integration of x raised to -2 is -1 upon x आएगा. x raised to -1 upon -1 plus integration of x raised to -2 is going to be x raised to -1 upon -1 is equals to integration constant. Simplified further, so it is going to be y square upon x
x minus 1 upon x minus is 1 equals upon to. x. So this is the final answer. Have you all understood this? कि कैसे हमने ये problem solve किया Yes, है? ma'am. Yes, Okay, ma'am. very good. Very good then. Now you all solve the second question. Where it is now. I had given you one more problem. Here you go. This is the second question and I'm giving you all 5 minutes. Your time starts now. Start solving this question. The way I have solved this question, it is exactly similar to this. But आपको चेक करना पड़ेगा कि रूल नंबर 3 इज एप्लीकेबल और रूल नंबर 4 इज एप्लीकेबल. आप मुझे बताओगे कि कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा. फोर्थ रूल Okay? मैम आपने बताया था. कैसे पता रूल नंबर 4 एप्लीकेबल होगा? मैम आपने ही बताया था. मैं रॉन्ग भी तो हो सकती हूँ. अच्छा. तो चेक करो जरा कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा. रूल नंबर 3 भी फिट हो सकता है या फिर रूल नंबर 4 में भी जा सकता है. तो यू हैव टू चेक. अच्छा, हु इज आंसरिंग कि रूल नंबर 4 होगा, मैंने बताया था. अच्छा ये बताओ रूल नंबर 4 अगर फिट होगा तो मतलब मुझे क्या मिला रहेगा सो दैट कि आई कैन थिंक ऑफ कि रूल नंबर 4 इज एप्लीकेबल. व्हाट आई हैव टू चेक. मैम उधर व्हाट आई खाली विल y हैव. के रहेंगे, मतलब y के टर्म में आया रहेगा इक्वल जो यस तो पार्शियल मतलब डिफरेंशिएशन अपन माइनस m निकालेंगे. एफ ऑफ वाई. यस एब्सोल्युटली राइट. हाँ, सो हम रूल नंबर 3 में n से डिवाइड करते हैं, रूल नंबर 4 में हम माइनस m से डिवाइड करते हैं. एंड वी चेक कि whether my given function or my given polynomial in terms of y only or not, or it should be a constant. So then I can think of rule number 4. So yes, quickly or tell me and randomly I will pick up the students and that student has to answer. अगर किसी ने मुझे stop नहीं किया बीच में मतलब सभी को समझा है. So everyone should be able to do this problem. Your time starts now. Start solving this question. I'm giving you all 5 minutes. After 5 minutes, I'm going to pick up any random students and that student has to explain me कि उसने कैसे solve किया. Last 1 minute to go.
Okay, let us start. Afzal, I think now you can answer ki what is to be our first step. Afzal, roll number 117. Yes, tell me what is your given question now. 1 second, 1 sec. Yes, wait a minute. Tell me what is the given differential equation. It's okay, just whenever you're speaking, no, just try to answer. Yes. Tell me the given question. What is our given question? Ma'am, y e raised to x plus x square y plus 1 Y e 2dx raised to minus x. 2x. Slowly भाई slowly, मुझे याद थोड़ी ना है क्या है. Y raised to x plus xy square dx. Am I right, अफजल? यही बोला तुमने? आगे क्या है by the way, अफजल? Okay, Srinav, Shyam, you tell me. What was that given question? Srinav, you answer me. Srinav, am I audible to you? These kids are not getting the attendance. Srinav, Afzal, Amir. Amir, can you answer me what was the question? Yes, ma'am. बोलो. ये जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है क्या? हेलो मैम. हाँ, कौन बोल रहा है? ओके, हाँ माइनस मैम, करेक्ट है. हाँ, माइनस आगे. e raised to x Yes. Okay, minus e raised to x. dy is equals to 0. Okay, dy equals to 0. So this is my given differential equation. Okay. Yes. Okay, Amir, what is to be checked first? First, we have to check what is m and n. Okay. So m और n क्या है बच्चा? M y raised to y e raised to x plus x y square. Plus x y square. Correct. Then फिर what is n? n x y. Sorry, come again. What is n? n bracket x comma y बता रहा था मैं. हाँ, m हो गया. n equals बताओ to n. minus. हाँ मैं बता रहा हूँ. Minus e raised to x. Okay. Okay. Then फिर after that? चेक करना है दोनों इक्वल है कि नहीं m और n. अच्छा, m और n इक्वल. नहीं del of m by x del of y. What is del m by del y? Differentiation of m with respect to y. Okay, partial differentiation. ये भी partial बोलो. difference. हाँ, partial का मीनिंग अलग हो जाता है फिर ओके, चलो बताओ जरा. del m by del y क्या हो जाएगा फिर e raised to x और y 1 हो जाएगा. ओके, e raised to x y 1 हो जाएगा. ओके, फिर प्लस 2xy. 2xy हो जाएगा. हाँ. वेरी गुड आमिर. और इसका दैट्स योर आंसर फाइनल आएगा आंसर. 1 हट जाएगा, बस वो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो वही. देन फिर इसका del n by del x. ओके, वेरी गुड. और इसका तो माइनस e raised to x था, वही रहेगा. हाँ, तो यही आएगा आंसर. हाँ. माइनस रहेगा. हाँ रहेगा. ओके, इज इट राइट किड्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So tell me, given differential equation exact हुआ क्या आमिर? नहीं मैम. Okay, so क्या बोलोगे?
Since del m by del y is not equals to del n by del x, तो क्या लिखूं मैं next? Therefore it is not exact. Therefore the given Given differential equation. Given Therefore the differential given equation is not differential equation. Absolutely right. Is not Not exact. Very good, Amir. So you are getting attendance for today's class. So I'm making question number 1. Okay, question number star. Okay, who's next now? मैंने और किसको पूछा था जिसने आंसर नहीं किया मुझे? Jay, you answer me. Jay, can you hear me? Roll number 141. Srinav, you still don't want to answer in the class? Okay, Rahul, can you tell me what is to be done next? Rahul Singh, roll number 156, I guess. हाँ मैम आगे ना थर्ड और फोर्थ रोल में थोड़ा मतलब एक्स और वाई में फंक्शन का आंसर आ रहा है, तो वैसा सिर्फ एक्स में या फिर 6y में तो नहीं आ रहा। ओके, तो हम थर्ड और फोर्थ रोल में। अच्छा, तो पता है रूल सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, रूल नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, विल चेक फैजान। पहले बताओ रूल नंबर 1 फिट होगा क्या ये इसमें? नहीं मैम, हमें पता चल गया कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ओके, तो रूल नंबर 1 फिट नहीं हो रहा है। ओके, देन सो रूल नंबर 2 की में भी फॉर्म में नहीं दिख रहा है वो। सो रूल नंबर 3 विच सेज, पहले ना मैं ये कैलकुलेट करती हूँ, del m by del y माइनस del n by del x। क्या था हमारा del m by del y? इट वाज e raised to x plus 2xy, देन del n by del x क्या हो जाएगा? प्लस e raised to x हो जाएगा। Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then what is to be done? Now अभी ये तो हो गया मेरा del m by del y minus del n by del x। अभी मुझे अब देखना है कि मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए। Should I be dividing it by m or should I be dividing it by n? So पे m से माइनस m से डिवाइड करके देखती हूँ, मुझे क्या मिलता है। बिकॉज n से डिवाइड किया तो कुछ मिलेगा क्या मुझे? अगर बच्चों मैंने n से डिवाइड किया, n क्या मेरा e raised to x है ना? अगर मैंने n से डिवाइड किया तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? What I'll be getting if I'll divide by n? n क्या मेरा, sorry, n is what? Minus e raised to x। क्या कुछ मिल रहा है हमको? Am I getting constant of function of x only? Am I getting that? No. So that means rule number 3. That means rule number 3 is not applicable, right? So what I'm going to do? Okay, so I'm going to divide it by m. minus m. In rule number 4 में हमें किससे डिवाइड करना होता है? माइनस m से डिवाइड करना होता है। So here I'm going to divide it by minus m. तो माइनस m मतलब माइनस हम बाहर रखते हैं। m क्या था मेरा? m was y raised to x plus xy square. Y raised to x plus xy square. Let us see that what I'm going to do next. So क्या हो जाएगा अभी next? इसको भी कैसे solve कर सकते हैं further? How can I solve it further? हाँ बोल। Okay. माइनस y को क्या करूँ मैं? कॉमन। एक मिनट रुको जरा, मैं 2xy हो जाएगा और ये प्लस 2 टाइम्स e raised to x हो जाएगा ना, राइट? e raised to x प्लस e raised to x अपॉन माइनस, इसमें नीचे कॉमन क्या है? y, तो आई एम टेकिंग इट आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विद e raised to x प्लस xy, राइट? नो, ना न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालो, तो जरा 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा अंदर? xy प्लस e raised to x अपॉन माइनस y e raised to x प्लस xy। कैंसिल हो रहा है क्या? यस मैम। ये कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद? यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 2y। नाउ इज इट कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ y ओनली? Yes. Therefore रूल नंबर 4 क्या होगा? फिट होगा इधर एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? इट इज गोइंग टू बी e raised to इंटीग्रेशन ऑफ f of y dy। इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसा ही आपको इधर सॉल्व करना है। सो यू विल टेक -2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon dy
and integration of 1 upon y क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, and then you take this -2 with this y, and answer is going to be y raised to -2, which is 1 upon y square. So you got integrating factor, जो आप अपने given differential equation से multiply करोगे आपको नया differential equation मिलेगा, and then you are going to apply its solution of exact differential equation का formula. Clear to all the kids? Yes, ma'am. तो ठीक है, जैसे Yes, कि आपका ये सेशन खत्म नहीं हो पाया है तो आपने ये नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करोगे एंड यू विल अपलोड द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से और इसके आगे क्या आप सॉल्व करने वाले हो. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. मैम e raised to x upon y है. रेस्ट टू एक्स अपॉन वाई आया. फाइनल आंसर बोल रहे हो क्या आप? हाँ मैम. e raised to x upon y. No बच्चा, no, that's not the final answer. वो दो टर्म आएगा बेटा, दो टर्म आएगा, उसमें से पहला वाला टर्म आपने करेक्ट बोला है, एक और टर्म आएगा, सो वो एक टर्म पे और काम करो. आपका फर्स्ट वाला टर्म करेक्ट है. ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. Have you all taken the screenshot of this? So I'm giving you one more question for homework. I'm giving you all one more question for homework. अभी ये homework question मैं next lecture में नहीं लूंगी, ठीक है? So this you have to solve. So this question you will have to solve on your own. And ये इसका solution, which I have left half, and this one, you are going to upload it in the next class, or you can upload it on the Google Classroom. Wait, I'll create one assignment over there, and then you all can upload it over there. Okay, take down this homework question. उसका ऐसे सेम है ना? हाँ बेटा. Okay, these two questions are there, and you just जो मैंने methods जो steps बताए वही step आपको follow करना है, and you will get the answer. So that's it for today's class. So I'm sharing the attendance link in the chat box. Okay, where the attendance link? और ये नेक्स्ट लेक्चर में आपके गूगल क्लासरूम में मैं देखती हूँ, जैसा भी पॉसिबल होगा वैसे हम असाइनमेंट अपलोड करेंगे. और आई शुड नो इट्स अ हाई टाइम टू कीप वन टेस्ट नाउ. टाइम ही नहीं मिलता है हमें टेस्ट कंडक्ट करने के लिए. सो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का, एटलीस्ट रहेगा, वरना कुछ गड़बड़ वड़बड़ करोगे, माइनस रॉन्ग लिखोगे, प्लस रॉन्ग लिखोगे. सो आई हैव शेयर्ड द अटेंडेंस लिंक इन द चैट बॉक्स. काइंडली फिल द अटेंडेंस. एंड ये रुचिका एंड ऑल सब लेट आना स्टार्ट क्यों कर दिए? रुचिका, रितेश, और ये कौन कौन बच्चे हैं? ये सब तो आते ही नहीं, दिखते ही नहीं क्लास में. बाय मैम. बाय, टेक केयर. Bye, ma'am. रुचिका, Ma'am. रितिका. यस सर, अनिश बोलो बेटा. Ma'am, I have to practice it only. Yes, only these two. Okay, take care. Yes, take care Anish. Bye, ma'am. I'm ending this meeting now. I hope you all have got the attendance link. मैम आई एम लेफ्ट. मेरे को लिंक नहीं मिल रहा है. एक मिनट. Okay. Chat box में देखो बेटा, और I'll share it one more time. I have shared it one more time, Harsh. Just see. Just now I shared. हाँ, मिल गया मैम. मिल गया? Okay. Okay, chalo, bye-bye. I'm ending this meeting now.